Good morning everyone. Topic for the today, electric flux and Gauss's law. Right? With the charge we have already completed Coulomb force and electric field. Right? And next one, dipole. Now this is part number 5, electric flux and Gauss law. This is the another scalar way to measure the effect of a charge. Usually electric flux defined as number of field line. The symbol used is phi. Number of field line passing through. Number of field lines passing through an area normally. Consider this is some area, right, through which field lines passing. Then the total number of field lines passing through an area would represent electric flux. The another way to calculate flux is surface integral of electric field. Right? So this is E dot ds integration. ds here represents surface, a small element, right? And then integration total electric field. एक पूरी सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को इकट्ठा किया जाए तो दैट बेसिकली रिप्रेजेंट conceptually the electric flux. This equation first can be written by the many ways. One, if you have any finite area, this can be written as E dot A, right? Or otherwise you can write for a very small area d phi E dot ds. You can choose dA or ds, any symbol. Right, I am choosing surface area symbol ds. Further, it can be E ds cos theta, or integrating both sides d phi integration E ds cos theta, or phi equal to integration E ds cos theta. Usually E is taken to be constant. These all are the different way to represent flux. फ्लक्स बेसिकली एक जगह से पास होने वाली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज वेरी लार्ज इन जनरल, राइट? सो दिस इज फ्लक्स, राइट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी having SI units Newton meter square per coulomb, right? Usually एक एरिया से पास होने वाली जितनी लाइंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली एक स्केलर क्वांटिटी का नाम है फ्लक्स. फ्लक्स को E डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट, राइट? E डॉट ए के E और एरिया के स्केलर प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया. स्मॉल फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया d phi E dot ds इंटीग्रेशन से phi E dot ds. The concept used by the Gauss to calculate the flux through a surface in which some charge is enclosed. So we'll go for Gauss's law using this flux concept, right? Gauss actually, scientist name, basically suggests that total flux linked with a surface or charged, right? It was given by Gauss. What Gauss suggests? Total flux associated with the part charge is 1 upon epsilon 0 times to the total charge enclosed by the surface. Enclosed by the surface. एक बॉडी के साथ टोटल फ्लक्स जो होगा वो उसके चार्ज और मीडियम पे डिपेंड करेगा. लेट ए बॉडी हैविंग सम चार्ज स्मॉल q, then the flux associated is q by epsilon 0. This can be written in the form of if a surface consists multiple charges, then in that case summation q upon epsilon 0. If the same body, same system placed somewhere in a medium, then in that case the phi is summation q upon epsilon, right? उसी चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया तो एप्सिलॉन आएगा. In general we are using for the vacuum permittivity of the free space, right? This represents flux. That was Gauss's law or Gauss's theorem. We can prove this. Let me go for the proof of this theorem, right? So this is definition. Let me go to the proof of this theorem. It's Gauss's law. Proof. right?
consider a charge anywhere in the free space around which consider a Gaussian surface. So while choosing a Gaussian surface, I suggest read textbook, right? There are 6 general points to apply the Gauss's law. Gauss's law is valid in general but true for certain cases. For this, हम जब एक Gaussian surface बनाएंगे तो it should enclose totally, चारों तरफ से उसको कवर करें. Gaussian surface के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, राइट. उसकी डायरेक्शन अगर रेडियल आउटवर्ड इस पॉइंट पे है तो यहाँ भी रेडियल आउटवर्ड होना चाहिए, वहां अगर वैल्यू हुई है तो यहाँ भी. तो दिस काइंड ऑफ सरफेस इज यूजुअली नोन एज Gaussian surface, राइट. सो एक चार्ज लिया मैंने, इसके चारों तरफ एक Gaussian surface कंसीडर किया, उस Gaussian surface के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट, दिस ब्लैकेंड एलिमेंट, छोटा सा एक एलिमेंट चूज किया. लेट मी मार्क इट ds वेक्टर, राइट. एंड रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज टेकन टू बी कैपिटल R. डन डियर. सो इस छोटे से पॉइंट पे, इस छोटी सी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to charge capital Q, as we are aware this is kq by r square. So by the nature of charge it would be away outward. Let me mark it here, right. इसको यहाँ electric field को यहाँ mark करते हैं. This is E. ds is an area vector. एरिया वेक्टर बेसिकली एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. अगर ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आउटवर्ड. अगर ये सरफेस यहाँ है तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड. सरफेस इस तरह से, इट मे बी डाउनवर्ड और अपवर्ड, यूजुअली टेकन टू बी आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव सरफेस. इफ इट इज एनी हाउ इंक्लाइंड तो ये टेढ़ा हो जाएगा. सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दैट्स व्हाई समटाइम वी यूज स्मॉल n कैप, एक छोटा सा यूनिट वेक्टर चूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर. सो दिस इज E, दैट्स ds. सो द डेफिनेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद ds, इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा. सो दिस इज d phi and the scalar product of E and area vector. Now look at the diagram. Both are acting in the same direction. That's why d phi is equal to E ds cos 0, and the value of cos 0 is 1. So d phi is equal to E ds, as cos 0 is 1. So now integrating both sides. Integrating both sides, right. With that integration, this become d phi integration E ds. Now use equation first to put the value. D phi become phi after integration. This integration as it is kq by r square into ds, right. Now look, k small k is a constant 9 on 10 by 9. For this surface, if I am choosing area here or here or here, neither r changes nor q changes. चार्ज भी नहीं बदलेगा. अगर मैंने छोटा सा एरिया यहाँ लिया होता तो r भी उतना ही रहता और चार्ज भी उतना ही रहता. यहाँ लिया होता, मेरे चॉइस ऑफ एलिमेंट एरिया से इस kq r स्क्वायर पे फर्क नहीं पड़ता. सो इट कम्स आउट ऑफ इंटीग्रेशन. Now this is ds. So this is phi. Now ds is a small area. इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्फीयर के पूरे का एरिया आएगा. I hope you people are aware about this total area. So phi is small k q by r square into 4 pi r square, right. This r square will be cancelled out. Done. So this phi would be k value 1 upon 4 pi epsilon 0. This is q into 4 pi, right. 4 pi again cancel out. Ultimately what remains? Phi is q by epsilon 0, the Gauss's theorem or Gauss's law, right. This is the proof of, usually we are using a symmetrical surface and this is a condition, right. So I request इसको थोड़ा सा कहीं टेक्स्ट बुक के उन 6 पॉइंट्स के थ्रू थोड़ा सा एक थोरो स्टडी दी जाए. So I repeat,
the surface should be chosen in such a way that it encloses completely the charge and surround it symmetrically. Done? Right? That's Gauss's theorem. Am I clear? Right? In next lecture, we'll go for the 3 applications of this theorem. Thank you everyone.